Hello and welcome back to Droanacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily editorial analysis covering 18th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. So let's begin with it. So let's begin with our first editorial today. It is a North Pole for Science and Technology. Well, this editorial has been written by M. Venkaiah Naidu, the Vice President of India. So in this editorial, M. Venkaiah Naidu talks about the contributions of Dr. Y. Nayudama, as this is the birth centenary year of Dr. Y. Nayudama. Dr. Y. Nayudama, he is a Padma Shri recipient, a well-noted scientist, and was a former director of Central Leather Research Institute, Chennai. Along with this, a former Director General of the Council of Scientists and Industrial Research. Therefore, after reading this editorial, we should know about Dr. Y. Nayudama, his work and contributions, and also that how scientists and technologists can be the agents of change. These are certain points and certain questions that we should be able to answer after reading this editorial. So let's first discuss the role of ancient civilizations in shaping the mankind. Ancient civilizations like Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, Greeks, Chinese, as well as Indus Valley civilizations. How these ancient civilizations shaped the mankind. Well, these civilizations have evolved the humans with time. Humans by nature, they are nomadic, hunter-gatherer. But because of these ancient civilizations, mankind, human beings, they gave up their nomadic nature, their nature of hunting and gathering. Rather, they started settling down in one place. एंड ये जो एवोल्यूशन है ये लगातार चलता आया. इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, एंड अल्टीमेटली वी बिकेम द मेंबर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसमें हमारे कुछ मॉडर्न सिविलाइजेशन के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं. इस जर्नी के जो मेन फीचर्स रहे हैं दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज. किस तरह मैनकाइंड ने नॉलेज एक्यूमुलेट की, and we started a pursuit of higher standards of living, which were basically propelled by rapid strides in the field of science and technology. So basically, with the help of science and technology, mankind has entered into this modern civilization where we have higher standards of living. Science and technology हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैनकाइंड की एवोल्यूशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट नाउ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल एनिमल. एंड अब हम ये फिनोमेना देख रहे हैं दैट ह्यूमन्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू टूल्स, जिससे हमारे जो एम्बिशंस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. एंड देन देयर इज़ अ रिलेंटलेस क्वेस्ट विच इज़ गोइंग ऑन फॉर बेटर लिविंग. एंड इससे कुछ काफ़ी सीरियस इश्यूज़ भी रेज होते हैं, इश्यूज़ रिगार्डिंग आर वैल्यूज़, आर पर्पस, आर रेलिवेंस, एंड दिस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ब्लाइंड फोल्डेड परस्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन उठता है, हु इज़ द मास्टर, साइंस और द पीपल? सो द मेन इशू इज़ अबाउट एजेंडा सेटिंग. So if we talk about the issues related to our values and interest, so it is very important here to note Dr. Y. Nayudama. As we talked about, this is the birth centenary year of Dr. Y. Nayudama. He is a Padma Shri recipient, a well-noted scientist, and he has been a former director of Central Leather Research Institute, Chennai, former Director General of Council of Scientific and Industrial Research. So as we look towards his work and contributions and his philosophies, it threw a distinct light on various issues related to science and technology. Dr. Y. Nayudama, he outlined a clear set of goals and objectives
and the values that should guide their progress. यहाँ पे सबसे बड़े इशू ये आता है कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोगों को अडेप्ट करना चाहिए और शुड पीपल अडेप्ट टू साइंस. द मेन क्वेश्चन इज कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोगों के हिसाब से अडेप्ट होना चाहिए या फिर लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए. Whether they should emerge from the felt needs or concern of the people or should be driven from the top. क्या नेसेसिटी की वजह से हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द टॉप. वॉट शुड बी द वैल्यू गाइड. किस तरह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो परस्यूट है इसे गवर्न किया जाए, इट्स एप्लीकेशन, how to handle, how to contain the undesirable consequences of this indiscriminate application of these powerful tools. इन सब को लेकर डॉक्टर वाई नायुदमास के जो वर्क और contributions हैं, this gives us mirror to all these concerns. As he demonstrated that how scientists and technologists could or can be effective agents of such change. जो साइंस है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है. इट इज़ परस्यूड इन एन आइवरी टावर. मे नॉट बाय इट सेल्फ इट कैन सर्व ह्यूमैनिटी. इट शुड बी टेकन टू द पीपल इन अ फॉर्म दैट विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल टूल्स दैट एवरी पर्सन कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. तो साइंस शुड बी देयर फॉर सोसाइटी and technology should be driven by the need of the people. Simple answer. The science and technology, the technology should emerge when there is need and concern of the people. It should not be driven from the top. Talking about Dr. Y. Nayudama, he actually reshaped the entire leather industry as he was a renowned leather scientist. His pioneer contribution is to change the face and the nature of tannery industry in our country. This profession, which basically includes collection of hides and skin of dead animals, which is pursued by some trained, communities. It used to be looked down upon due to factors like, the stench and the difficult nature of the work that is involved with it. एंड यहाँ पे डॉक्टर वाई नयुदमा ने ये शो किया कि किस तरह हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस तरह के प्रोफेशन को जिसको इतना लुक डाउन किया जाता था, वी कैन मेक अ डिफरेंस इन टू इट. एंड ही बेसिकली सक्सीडेड. He succeeded in this by enabling the removal of the stench and improving the skills of those who were involved in this job. He promoted leather products to improve the income of the tannery workers. And his process में he also proved the application of science and technology could help in enhancing the economic viability of this activity, जहाँ पे इस तरह के टूल्स को अप्लाई किया जा रहा है जिससे कि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है, बिसाइड्स प्रमोटिंग एंड मोर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. एंड इन्हीं की वजह से लेदर प्रोडक्ट्स और लेदर इंडस्ट्री को एक बेटर एक्सेप्टेंस मिली है लोगों के अंदर. इंडिया के जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं. वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट. सो द पोजेशन ऑफ अ क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट जैसे कि शूज़ हो गए, हैंड बैग्स हो गए, इट कम टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ वंस इमेज. सो पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़ आर नाउ इन्वॉल्व इन टू लेदर इंडस्ट्री. यहाँ पे एक जो ट्रेडिशनल बैरियर था वो ब्रेक हो गया, जो प्रेजुडिस थे वो ब्रेक हो गए. नाउ people from all the communities are participating in this leather industry. तो जो value guide है about the choice of technology, that is important. यहाँ पे हमारी जो focal value रही है which is guiding the people all across the globe, that is materialism and consumerism. एक इस तरह का एक unbridled pursuit बन चुका है, इस तरह के ends हैं इसके, it does not help people living in peace with them. तो यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी यहाँ पे रोल पे आती है. इट ले स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल परस्यूट फॉर इंटरनल पीस टू लिव इन हार्मनी विद सोसाइटी एंड विद नेचर. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं विच शुड बी इन हार्मनी विद द नेचर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स एंड थ्रेड्स, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ India, M. Venkaiah Naidu, say that he stuck with the vision of Dr. Nayudama.
His views are reflected in some of the major initiatives of government, talking about the need for empowerment of all the sections of society. जो women हैं, they should have their bank account. They should be treated differently and respected in the family. इससे उनकी जो इमेंसिपेशन है इसमें हेल्प आती है. एंड ये हमारी जो स्कीम चलती है प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसका एक क्लियर कोर है जिसके अंदर 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हुई है और विमेन एम्पावरमेंट हुई है. सो प्रधानमंत्री जन धन योजना को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये हमारा एक नेशनल मिशन है जिसका फोकस था रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन. एंड इसी के साथ साथ हर एक हाउस होल्ड के अंदर हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ है. यहाँ पे डॉक्टर नयूदमा की जो फिलॉसफी है उसमें सेल्फ रिलायंस भी एक इम्पॉर्टेंट कोर है. ही वॉज ऑफ दिस ओपिनियन दैट आर कॉलोनियल पास्ट और जो हमारी वेस्टर्न ट्रेनिंग है, जो ओरिएंटेशन रही है, जो एजुकेशन हमें मिली है, इट मेड अस लुक टू द वेस्ट टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी. किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन है, कोई वेस्टर्न रेमेडी मिल जाए, बट these Western technologies, these Western solutions are not able to solve Indian problems because our problems are different. Our problems are in different contexts as well. So Dr. Y. Nayudama always emphasized that India should be self-reliant. हमारी जो self resilience होनी चाहिए when it comes to science and technology, and this is the essence of Atmanirbhar Bharat initiative. This is the vision of self-reliance for India. तो यहाँ पे नोट कीजिए इस आर्टिकल के अंदर डॉक्टर वाई नयूदमा की जो फिलॉसफी रही है और किस तरह गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, इनको भी आपस में रिलेट किया जा रहा है. When it comes to inclusion of everyone, empowerment of all sections of society, we have Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana as an example. When it comes to the philosophy of self-reliance, then Ayushman Bharat initiative comes as an example. And over here we can also refer to the United Nations Charter. Dr. Nayudama emphasized to the point of enabling all to live in dignity, have worth, equality of rights, better standards of life and security. हर एक पर्सन इन सभी मेजर्स के साथ नेशनल एंडेवर्स में पार्टिसिपेट करें. दिस इज़ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल और द फिलॉसफी ऑफ सबका साथ एंड सबका विकास एंड सबका प्रयास. ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. लिविंग विद डिग्निटी, हैविंग वर्थ, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, पार्टिसिपेशन इन ऑल नेशनल एंडेवर्स, सबका साथ, सबका विकास एंड सबका प्रयास. So it is very rare to find, such a far-sighted and visionary scientist. He actually, unfortunately, died in a plane crash in 1985. But his vision at that point of time is working for India right now. So he was a great, man with a great vision. Dr. Nayudama, he was a link in the chain of India's great scientist heritage. इससे पहले अगर हम हमारी साइंटिफिक हेरिटेज की बात करें, वी हैव ग्रेट साइंटिस्ट लाइक बौद्धायना, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, महावीरचार्य, right? We have a great line of scientists in India. Charaka, Patanjali, Kannada. However, this heritage kind of dimmed during medieval period. As the medieval period was marked by the foreign invasions, at that point of time we don't have a big heritage of scientists. But as we come towards the modern time, Dr. Y. Nayudama is an important name. And his efforts and his contribution, they are very important. They were made to restore the pride of India being a Vishwa Guru. India was a Vishwa Guru in the past, and his contributions and efforts can restore the pride of India being a Vishwa Guru. So all of us need to participate in this effort by streamlining our system of education, our modes of science and research. So we are living in the time where knowledge is the real power, and we need to empower all with knowledge that is the best resource for every individual.
We need knowledge ताकि we can enable a resolution to the problems of our country. As if we talk about Dr. Nayudama, he always laid stress on the point that education is not to provide relief, that it should release the inner potential of all and everyone, and it should make everyone self-resilient, self-confident. So we need such a system of knowledge which provides in every domain. And ultimately यहाँ पे nationalism एक positive force है, इसके ऊपर भी डॉक्टर नयूदमा ने force किया. He believed that individuals they flourish and उनका जो best आता है it comes with the sense of community participation and in the environment of collective endeavor. तो हमें इस तरह का ecosystem चाहिए which is guided by the spirit of nationalism. So nationalism is a positive force जिससे हमारे कंट्री की रैपिड प्रोग्रेस हो सकती है by realizing the full potential of every individual. It is not a negative factor which is being propagated by some. It's a positive factor जिससे हर एक individual अपना अपना best perform कर रहा है and ultimately the country is progressing. तो जो भी हमारे developmental strategies हैं globally, they are all based on modern scientific and technological advances. एंड जिसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं दैट वी आर सीइंग डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, इनइक्वालिटीज़ आ चुकी हैं. सो व्हाट शुड बी नीडेड इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, ये हमें देखना होगा. फॉर डॉक्टर नयूदमा, एनवायरनमेंट वॉज नॉट अ पीस ऑफ रियल एस्टेट, इट्स आवर हेरिटेज विच हैज़ टू बी हेल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड इट इज़ आवर सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. So this is his birth centenary year, 1920-22. It's important for us to know his contributions and what can be the role of science and technologists in this area or agents of change. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल IMD डिपार्टमेंट ने जो रिसेंटली एक फोरकास्ट किया है जहाँ पे इंडिया को एक नॉर्मल मॉनसून प्रेडिक्ट किया गया है. इट इज़ रिलेटेड टू दैट एंड इस रिपोर्ट के अंदर हमें 99% ऑफ आर लॉन्ग पीरियड एवरेज दैट इज़ 87 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल रिसीव होगी, ये फोरकास्ट किया गया है. तो ये एक मल्टी स्टेज मॉनसूनल फोरकास्ट था. अप्रैल में होता है और सितंबर में होता है. दिस फोरकास्ट जो जिस वजह से ये न्यूज़ में है दैट केम इन अप्रैल. तो इसमें कुछ डिटेल्स दी गई कि कितनी रेनफॉल हो सकती है इन द मंथ ऑफ मॉनसून, कि क्या रेनफॉल इवनली होगी कि नहीं, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी या नहीं, व्हाट कुड बी द लॉपसाइडेड. एंड यूजुअली IMD ऐसी इंफॉर्मेशन लेट मई या अर्ली जून में शेयर करता है, बट दिस टाइम दिस केम इन द अप्रैल. फोरकास्ट में अप्रैल चूज़ किया गया बिकॉज इट इज़ ओनली अ जनरल इंडिकेटर. इससे हम अभी क्योंकि मानसून काफ़ी दूर है, 1 जून से केरला पहुंचेगा, अभी हम इससे ज़्यादा यूज़ नहीं ले सकते. हाउएवर जो कि इस रिपोर्ट में कहा गया दैट इट्स गोइंग टू बी अ नॉर्मल मानसून. इट प्रेडिक्टेड कि फ़िलहाल देयर इज़ नो एल नीनो. हमने जब ये रिपोर्ट डिस्कस की थी हमने तब भी बात की थी, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, एल नीनो इज़ अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ योर सेंट्रल पैसिफिक ओशन. एंड इससे हमारा जो मॉनसून है वो नेगेटिवली रिलेट करता है. जो मॉनसूनल रेनफॉल है वो डिक्रीज़ हो जाती है. इट बेसिकली ड्राइज अप आवर मॉनसून रेन. लेकिन अगेन वी रीड वन मोर इम्पॉर्टेंट फिनोमिना विच इज़ कॉल्ड एज IOD विच इज़ इंडियन ओशन डाइपोल. एंड इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियन ओशन डाइपोल राइट नाउ इट इज़ इन दी पॉजिटिव फेज़. एंड अगर ये पॉजिटिव फेज में है सो इट्स गोइंग टू बी गुड रेन फॉर इंडिया. सो इट हैज़ बीन दी फोरकास्ट कि इस साल हमारे पास जो मानसून रहने वाला है इट्स गोइंग टू बी दी नॉर्मल मानसून. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अलावा जो शेयर की गई है दैट वाज रिलेटेड टू LPA दैट इज़ लॉन्ग पीरियड एवरेज. क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने LPA की जो डेफिनेशन है इसे भी चेंज किया है. एज वी टॉक्ड अबाउट, LPA में पिछले 50 ईयर्स के अंदर जो एवरेज रेनफॉल हुई है उसे LPA के अंदर इंडिकेट किया जाता है.
सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इंडिया को इस LPA को हर 10 साल के बाद अपडेट करना होता है। तो इससे पहले अगर हम 1951 से लेकर 2000 तक देखते तो तब हमारा LPA कुछ 89 सेंटीमीटर्स था। दिस केम अंटिल 2018, लेकिन फिर इसे अपडेट किया गया एंड जब हमने 1961 से लेकर 2010 का जो पीरियड लिया तब हमारा जो LPA था इट केम अराउंड 88 सेंटीमीटर्स। एंड नाउ हम जो अभी काउंट ले रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1971 टू 2020 इंटरवल, एंड अब हमारा जो नंबर हो गया है दैट इज़ 87 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं while it on the surface हमें ये देख के लग रहा है कि इंडिया इज़ लूजिंग जस्ट अ सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एवरी डिकेड। हर एक 10 साल के बाद देयर इज़ अ लॉस ऑफ 1 सेंटीमीटर। However, it must be remembered कि this is showing the shift in rainfall. इसमें बड़ा शिफ्ट आ रहा है दी रेनफॉल विच वॉज रिसीव्ड बाय ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे ये जो चेंज है ये काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये जो लॉस हो रहा है हर एक सेंटीमीटर का हर एक डिकेड में, दिस इज़ द पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल, जिसमें उन्होंने 2 इपोक्स की बात की दैट वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ मॉनसून, ड्राई इपोक एंड वेट इपोक, एंड ये एक साइकिल चल रहा है अकॉर्डिंग टू IMD। तो अभी राइट नाउ वी आर इन दिस ड्राई इपोक एरिया जहाँ पे वी हैव लेस रेनफॉल, the mainly 30 years of less rainfall and 30 years of more than normal rainfall. That's how this epoch works. So because right now we are in this dry epoch area and therefore we are losing 1 centimeter every decade. And India actually entered into this dry epoch in 1970s and 80s. And right now as we see, we are right now in a neutral phase, and very soon by the end of the decade, by 2030 and 2040, we will enter into the wet epoch. So IMD presented the research which actually showed the changes in weather and rainfall in our recent years, and as we said, the change at the level of state or sub-district level, it has been very significant. We can easily see the effects of global warming. The tendency to heat the ocean has increased, and it is playing a very significant role in changing the rainfall distribution pattern. So IMD must update some of their processes, and they should rather focus on shorter forecast, जैसे कि 1 month or fortnight, rather than a whole long range forecast, because ज़्यादातर ये रहता है कि जो long range forecast होते हैं वो उतनी ज़्यादा accurate नहीं रहते. So this was the editorial related to IMD's forecast of Indian monsoon. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हाईलाइट करता है कि किस तरह चाइना की इंटरवेंशन म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्ट्रस रही है. द टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल इज़ फेटल फ्रेंडशिप. In this article, we will see how China's intervention proved to be disastrous for all these countries, what are the challenges which are faced by these countries, and what are the implications on India, and how has India responded to this. We will analyze the fatal friendship of China. So if we talk about Myanmar, Myanmar is China's closest neighbor. एंड चाइना और म्यांमार की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एज वेल. एंड म्यांमार वॉज द फर्स्ट कंट्री टू टर्न टूवर्ड्स चाइना. 1988 से ही म्यांमार हैज़ टर्न टूवर्ड्स चाइना, स्पेशली जब म्यांमार में स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल आया. दिस काउंसिल टुक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, एंड आफ्टर दिस वर्ल्ड सैंक्शंस वर अप्लाइड ऑन म्यांमार. But China, reassured that the generals of this continued support. 1989 में चाइना ने एक ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉर्पोरेशन साइन किया, एंड दैट मेड चाइना द सोल सपोर्टर ऑफ दिस इलेजिटिमेट मिलिट्री गवर्नमेंट इन म्यांमार.
इस मिलिट्री गवर्नमेंट को लेकर म्यांमार के अंदर जो डिस्कॉन्टेंट था वो लगातार बढ़ता गया, लीनिंग टूवर्ड्स चाइना एज वेल, अंटिल जो इंटरनेशनल सिचुएशन थी इट काइंड ऑफ एक्सप्लोडेड इन 2007 एंड देन विद अ फुल एंड ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन इसे बैलेंस किया गया. So Myanmar basically had a credible human development index rating earlier, लेकिन इससे पहले जो उनके अगर ट्रेड डाइवर्सिफाई होता आउटसाइड वर्ल्ड तब उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो काफ़ी अच्छा था. बट आफ्टर द वेस्टर्न सैंक्शंस इन 2007 जब ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल आया, दिस मेड चाइना द सोल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर म्यांमार. And this writer on a visit to Myanmar in 2008, they saw that there was mountainous stacks of Burma tea logs piled inside the army's military cantonment. And China actually became essential for the regime's survival, and they could not do anything more for the economic prosperity of Myanmar. म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार से अकेला वुड ही अराउंड 70% वुड म्यांमार से चाइना जाता था. इट वॉज क्लियर दैट चाइना वॉज ट्रिपिंग बेयर म्यांमार सेंचुरीज ओल्ड टीक फॉरेस्ट. दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ म्यांमार एंड चाइना. If we talk about Pakistan, Pakistan started well in 1947. As Pakistan had world's largest man-made irrigation system in Pakistan's Punjab, and it also had an international harbour at Karachi as well. It was not burdened by any governmental emphasis on kind of Fabian socialism. Pakistan की economy thrive कर रही थी. However, Pakistan's army entered into politics in mid-50s, and तब से जो ये progressive country था it kind of totaled a bit. Visitors, some visitors arrived from South Korea and they studied Pakistan's economic model. Internationally as well, Pakistan was playing their cards well. They were receiving military aid in plenty from US and later from China. जो पहला एग्रीमेंट पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉपरेशन के टर्म्स में चाइना के साथ हुआ, that was in 1963, immediately after India's border defeat. So it would not be incorrect to say that both Pakistan's internal dynamics and external policies, they have been influenced, because of their enmity with India. And this became the core reason for army and their continued role in politics. Now we are seeing that there is continuously growing radicalization of Pakistan. एंड जब से जनरल ज़ियाउल हक का जो रेन आया है तब से काफ़ी ज़्यादा वर्चुअली इस्लामाटाइज्ड हो चुका है. बट अगर हम चाइना के रिस्पेक्ट में बात करें, देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी नीड टू नो. द पाकिस्तान वाज यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स टू क्रिएट द तालिबान टू फाइट द रशियंस इन अफगानिस्तान, एंड देन डम्प्ड इन 2000 when US attacked Afghanistan. 2012 यहाँ पे एक डिफाइनिंग मोमेंट बनता है पाकिस्तान के लिए, when Pakistan launched a military operation against the terror and signed on to the China-Pakistan economic corridor. And then one thing led to the other. India and USA imagined that this China-Pakistan economic corridor would lead to major China's expansion into the Indian Ocean through Gwadar. And then comes the classic debt trap of China. चाइना की लगातार इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जाती रही, especially Imran Khan, who stated that his political career was like in the hands of China-Pakistan economic corridor. लेकिन यहाँ से पाकिस्तान भी चाइना के डेट के अंदर फंस चुका है. And now World Bank has also given warnings to Pakistan to go right after 1971 war. यहाँ पे चाइना का CPEC प्रोजेक्ट भी आ जाता है. Pakistan is China's gateway to the Islamic world as well as Indian Ocean, as it will help to mitigate the criticism of their brutal Ugaur genocide. And then if we talk about Sri Lanka, Sri Lanka, as it is said by a poet, that there has been a heaven on earth. It is this,
right? There's a tropical paradise in Sri Lanka. So over there, it is blessed by human development indices. It is second only to Japan in Asia. Sri Lanka is a largely Buddhist people, and यहाँ पे काफ़ी free education offer की जाती है government के साथ. But in this paradise, obviously there was a devilish turn over here as well. Here comes the story of Hambantota. Tota. जितने भी इकोनॉमिक सर्वेज वहाँ पे हुए थे, जो भी एडवाइजेस थी, स्टिल द महिंदा राजपक्षा ही बिल्ट हम्बनटोटा पोर्ट अगेंस्ट ऑल द इकोनॉमिक सर्वेज एंड एडवाइजेस. And Sri Lanka actually transferred the land as equity to China for 99 years. 2012 से लेकर 2016 तक जितनी भी श्रीलंका के अंदर FDIs आए हैं, चाइना अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ इट, एंड इट बिकेम द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर श्रीलंका. सो राइट नाउ श्रीलंका में जो प्रोजेक्ट्स हैं, China is funding 50 projects in Sri Lanka, which involves more than $1 billion, including Colombo Port and including Lak Vijaya thermal plant. There is a strong rumor that the project cost was padded for corrupt reasons so that Chinese loans are accepted. So again, Sri Lanka also fell into the ambit of China's debt vicious cycle. And right now Sri Lankan economy, it is incompetent and it is already almost about to melt down. And जो भी श्रीलंका का डेट है, इसमें चाइना का सबसे बड़ा शेयर है. Private banks have to run out of the funds to finance the imports. For Sri Lanka, the main source of revenue is tourism, remittances, all of that has dried up. So it is incredible to see that how availing Chinese money by Myanmar, Pakistan, Sri Lanka have ultimately made them, go through a bad economic crisis only. So this entire thing was explained in this editorial called as Fatal Friendship, where China's economic intervention proved to be disastrous for Myanmar, Pakistan and Sri Lanka. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल UK, यूनाइटेड किंगडम एंड रवांडा से रिलेटेड है. So United Kingdom, it has signed a deal with Rwanda basically to send some asylum seeker to this East Central African nation. And according to United Kingdom, this will save countless lives from human trafficking. So अगर कोई भी UK में illegally enter करने की कोशिश करेगा, now they will be relocated to Rwanda. And they are calling this scheme as innovative approach. They're saying that it is driven by our shared humanitarian impulse, and it was made possible by the Brexit freedoms. तो प्लान ये है कि वो सभी लोग जो कि यूके में जनवरी 1 से पहुँचे हैं, या फिर जो जनवरी 1 के बाद से आए हैं, चाहे वो ट्रक्स में बैठ कर आए हों, चाहे बोट्स के थ्रू आए हों, they will be flown to this landlocked African country called as Rwanda, and as UK is saying, it is done for their possible good. So all the asylum seekers who came to UK, will be sent to Rwanda, and then in Rwanda, they will assess for their resettlement over there. And इसे लेकर UK has paid, the government in Kigali 120 million, and for housing and integrating the migrants of this pilot scheme. And this will only last for 5 years. इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि द पीपल विल बी प्रोटेक्टेड, दे विल बी रिस्पेक्टेड, एंड दे विल बी एम्पावर्ड to further to achieve their ambitions and settle down permanently in Rwanda if they choose to. So this idea is to improve United Kingdom's asylum system as it faces the combination of real humanitarian crisis and evil people smugglers who are profiting by exploiting the system for their own gains. तो प्रॉब्लम ये तब आई है जब 2021 में ओवर 28,000 पीपल अराइव्ड इन यूके आफ्टर क्रॉसिंग इंग्लिश चैनल इन स्मॉल बोट्स. And for years the migrants are traveling to UK, especially from northern France. They are hiding on ferries and in trucks. काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के बाद भी जो टाइटर रेगुलेशंस लगी हैं, स्टिल दे वर एबल टू मूव दिस इलीगल ट्रैफिक टू द बोट्स, एंड काफ़ी डेंजरसली दे आर क्रॉसिंग दिस इंग्लिश चैनल एंड दे आर एंटरिंग इनटू यूके. सो एज पार्ट ऑफ दिस न्यू प्लान, कोई भी जो बोट है वो यूके में अनडिरेक्टेड तौर पे नहीं पहुंचेगी, एंड दोज हु आर कमिंग इलीगली दे विल बी सेंट टू रवांडा.
लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर क्रिटिसिज्म भी आया है, स्पेशली वी टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी. They are saying that migrants must not be traded like a commodity. They cannot be transferred abroad for processing. And they are opposing this arrangement in which UK is transferring the refugees or the asylum seekers to the third country in the absence of sufficient safeguards and standards. तो ये जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं सिंपली टू शिफ्ट द असाइलम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू इवेड द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, these are against the letter and spirit of refugee convention. Therefore, this entire pilot scheme is also getting criticism. लेकिन सिर्फ यूके ही ऐसा कंट्री नहीं है जो ऐसा कर रहा है. देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल लाइक ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, डेनमार्क. दे सेंड देयर asylum seekers to overseas to other countries. Australia has been maintaining their offshore detention centers since 2001. So there are many countries, they relocate them to the places like Nauru, Papua New Guinea. So abhi jo UK has made this entire plan of sending the asylum seekers to Rwanda, this is catching criticism. So that is all for this video. हमने इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में उन सभी एडिटोरियल्स को डिस्कस किया है. So that is all. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.